अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आऊं हैं लैला निसार। अॼु आऊं मौजूद आहियां डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज में। नाज़रीन, तव्हांखे ख़बर आहे त दुनिया तेज़ी सां तरक़ी कंदी वञे पई ऐं हिन वधंदड़ तेज़ी सां जेकी हीअ टेक्नोलॉजी आहे इन में जीनियाती बीमारियुनि जी बि ॻाल्हि थिए पई। अॼु हिते हिकु तक़रीब कोठाई वई आहे जंहिंमें जंहिंजो मौज़ू आहे जीनोमिक मेडिसिन एंड रिसेसिव डिसऑर्डर्स। अॼोकी तक़रीब जी ख़ुसूसियत इहा आहे त स्विट्ज़रलैंड मां हिकु ख़ासि डेलीगेशन आयल आहे। सो अचो त असीं ॻाल्हि ॿोल कयूं पिया रिसर्च एक्सपर्ट सां जीनियाती डिफेक्ट्स बाबति ऐं उन्हनि में मख़सूस तौर ते रिसेसिव डिसऑर्डर्स बाबति ॻाल्हि कंदासीं, जंहिं ते अक्सर करे घटि तवजह ऐं घटि ॻाल्हायो वेंदो आहे। अचो त उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं। शेड सम लाइट ऑन रिसेसिव डिसऑर्डर्स इन सिंपलर टर्म्स फॉर माय व्यूअर्स। To come to Switzerland to be trained. It's always, and coming back to your question, it's always great to interact with young minds because they are our futures, and only in Pakistan but also in Switzerland. And about recessive disease, Pakistan is like about 10% of the population in the world practicing marriages within the family or within the clan. And so there is a higher incidence of some genetic diseases. We cannot stop cousin marriages over here, right? But as you see that there are certain things to be adopted. So what are those? Do they have to go for screening, some testing that is required for that? So if you are in a clan or in a family where some members have been tested and diagnosed, then that should be, in the family planning, that should be something the future parents or parents who want another child, they might get genetic counseling. And so in other cases where it's something new, and this is where, we are intervening in the sense that we are trying to find this new diagnostic, but of course, in this case, we are one step behind compared to the other, the known cases. I'd like to know that you see technology is advancing day by day. Is it possible I today can know what disease may I have in the future? Is this possible? Well, it is possible for some disorders, not all. One can read your genome and make predictions of some risks that you have for some disorders. Not that many. But for example, one can have a risk for atherosclerosis, for heart defect, for atrial fibrillation, for diabetes, and of course for Alzheimer's disease. The risk for Alzheimer's disease is controversial. Some people want to know, and some people don't want to know. So the right of not to know is always there, and we need to respect individual preferences. With the genetic tests also, you can diagnose genetic disorders. There are many genetic disorders, more than 8,000. And also, with the genetic tests, you can see your risks of having an affected child with a genetic disorder. One more last question. Is it also possible to edit babies via genetics? As you probably know, we cannot edit embryos, but we can edit adults. Not all the cells of the body, but a fraction of cells of the body, some of cells of the body that are sick. So we can edit them, but we cannot edit all the cells of the body. That's impossible. Recessive disorders को आसान अल्फाज में कैसे समझाएंगे आप? रिसेसिव डिसऑर्डर वो मारूसी बीमारियां होती हैं जो ज़्यादा मतलब ख़ानदान में उसमें एक जो ऑटोसोमल रिसेसिव एक ख़ास किस्म की मारूसी बीमारी है, उसको हम कहते हैं कि वो ख़ानदान में शादी करने की वजह से ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमने देखा है कि जैसे उसके एग्ज़ाम्पल थैलेसीमिया है, एक बच्चों में खून की बीमारी है, तो वो ज़्यादा होती है अगर हम ख़ानदान में या कज़न मैरिजेस करते हैं। Well, recessive disorder is one of the major topic in genetics. It's a long studied topic, and Pakistan is very important in this kind of study because of this particularity in the population. And as has been already mentioned during the talks, the way to identify the cause of the genetic disorder is to go to consanguineous family. So there is a clear interest in studying the Pakistani population.
Everybody's using ChatGPT. Copying is one thing. It's a very useful tool, kind of magic tool to me. A lot of potential. We just need to learn how to use it properly. पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से शामिल है जिनमें कंसेंजनस मैरिजेस यानी कि कज़न्स में होने वाली शादियां बाकी दुनिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं। एक कुछ स्टडीज़ के मुताबिक रफली अराउंड 55% जो शादियां हमारे यहाँ होती हैं वो कज़न मैरिजेस हैं, और कुछ इलाकों में तो इसकी परसेंटेज 85-90% तक पहुँच जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई जीन के अंदर किसी तरह की बीमारी पैदा होती है तो हमारे पास हर जीन की 2 कॉपीज़ होती हैं। वालिदैन से एक कॉपी वालदा की तरफ से आती है, एक कॉपी वालिद की तरफ से आती है। नतीजा ये होता है कि अगर आप कज़न्स में शादियां करना शुरू करते हैं तो जो ख़राब जीन्स की कॉपियां एक साथ जनरेशन में जमा होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से कई तरह की जीनियाती बीमारियां हमारे यहाँ पाई जाती हैं जिनका रेशो बाकी दुनिया में बहुत कम है। मिसाल के तौर पे आपने सुना होगा दिल के सुराखों की बीमारियां हैं। ये सारी बीमारियां जो हमारे यहाँ कदरे बाकी ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा इसीलिए हैं कि हमारे यहाँ कज़न्स मैरिजेस की परसेंटेज। मेरा जेनेटिक्स के अंदर जो है वो बचपन से ही शौक़ था कि ये चीज़ देखना कि एक इंसान दूसरे से कितना मुख्तलिफ होता है और कैसे होता है, और गिवन कि ये सारी की सारी चीज़ आपको कोई भी एक इंसान दूसरे इंसान से सेम नहीं मिलेगा दुनिया में कहीं पे भी आपको। ये डिसऑर्डर्स कज़न मैरिजेस जी वजह सां थियनि था ऐं उन में सभिनी खां घणो करे उहे डिसऑर्डर्स आहिनि जेके अखियुनि ते असरु कंदा आहिनि ऐं दिमाग़ खे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ जंहिंखे चइबो आहे। ऐं इहो सिंध में वॾी आम शइ आहे, छो जो हिते कज़न मैरिजिस घणियूं थियूं थियनि ऐं विथिन द फैमिली। अॼु कज़न इमीडिएटली फर्स्ट कज़न सां नथी थिए त विथिन द फैमिली एंड विथिन द क्लैन और ट्राइब थियूं थियनि। पोइ छा इन जो मक़सदु इहो आहे त कज़न मैरिजिस न थियणु घुरिजनि या उन्हनि जी रोकथाम जे लाइ कुझु करणु घुरिजे? इन जो हल छा निकिरी सघे? रियली न थियणु खपनि। सो कैंपेन तव्हांखे हलंदे नज़र अचनि पियूं उन हवाले सां? कैंपेन जेका हलंदी आहे थैलेसीमिया में घणी हलंदी आहे, उते बि इन जो असरु ईंदो आहे त थैलेसीमिया में जेके जीन्स आहिनि वो जे हस्बैंड एंड वाइफ में ॿिन्हिनि में अचनि थियूं त पोइ प्रॉब्लम्स थियनि था। बाक़ी कज़न मैरिजिस में जनरली टीचिंग हूंदी आहे पर माण्हुनि ते असरु घणो कोन थो पए। सभ खां मेन ॻाल्हि उन में जेका ॿुधण ऐं सम्झण में आई उहा रिसेसिव डिसऑर्डर्स खे वठी इहा हुई त कज़न मैरिजिस जेके आहिनि उन खां अॻु में स्क्रीनिंग थियणु तमामु लाज़मी आहे ऐं रिसेसिव डिसऑर्डर्स पाकिस्तान में ॿियनि मुल्कनि जे मुक़ाबले में घणा ॾिठा वञनि था। सो फ़िलहालु एतिरो ई। कैमरामैन बाक़र सां मूंखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।